the Goodwill Ambassador of Veda, and DG Anti-Corruption, Mr. Vishwas Nangre Patil, who will officially launch Let's Get Happy app today. Now for the moment that we've all been waiting for, may I request Mr. Suniel Shetty, Mr. Vishwas Nangre Patil, and Mr. Manan Thakur to please come on stage and officially launch our revolutionary mental health mobile application. Gentlemen, the buzzer is in front of you. Please press the buzzer and officially launch a revolutionary mental health app for all. And there it is. It is officially launched. Congratulations to all three of you. Thank you for being here, being a part of this special evening. Okay, एक बार दोबारा buzzer photo up. Manan? Lovely. Okay, before we go to the press and ask their questions, I would like to request and ask a question each from all three of you. Okay, Manan first. Manan, what made you think of the app and mental health, and how did you start Veda? Mics, please. Sorry about that. Mr. Thakur. Sachin, thank you for that question. But let me first thank Vishwas sir and Anna for coming and taking our time to help us launch this app. It's fairly simple. I thought of the problem when I went through my own problems. So when I went through my own issues, I figured that I'm in a place where I can do something about it. So I did something about it. So I created Veda and I made this app. That's it. Fantastic. Fantastic. Wish you all the best for this. Thank you. Thank you. I think once, it's obviously said, in our problems, we revolutionize our own lives. And that's where we find our purpose as well. I think Manan's found his purpose, and that's how he's taken it forward. Sunil sir, you all know about your physical fitness, your discipline, lifestyle. How do you cope up with mental health as well? Because I think that is also a major issue, especially people in Bollywood also have gone through. And what are your thoughts? I think people in life go through this and constantly, and that's why for me, I think happy is like my workout. When I work out first thing in the morning, dopamine is what I get, that happy feel is what I get, and that's what keeps me going. And then when happy came in, in this virtual world where everybody believes that जो likes हमें मिलते हैं या जो appreciation हमें ऑनलाइन मिलता है उन लोगों से जिनको हम जानते भी नहीं हैं और बुराइयां जब होती है तो उन्हें खराब भी लगता है उस दुनिया से दूर लेकर जाकर to give them something that will take them to the real world, that will make them realize what real happiness is about. Real happiness is about your parents, your family, your friends telling you how you are and what they think about you, and not the virtual world. So I think this is a necessity today, and that's why I'm glad. And that's why, we made sure that we had Vishwas sir here for this, because I honestly believe he's a man of steel and he's leading a force that probably goes through the worst when it comes to mental pressures, away from their family, working probably 24 hours a day is what their calendar looks like, with no actual consistency or routine. So I think the right man to do this, because this is a force, that uniform, that men of in uniform have always made us proud. And I think he's the best man to do that. So thank you, sir, for being here and helping us launch Happy. Thank you so much, sir. The next question is from Vishwas sir. As Sunil sir exactly said, you have the toughest, the circumstances when you work 24 hours a day selflessly, and the hours are erratic completely. What are your views on mental health, and sir, how do you cope up with as well? See, first of all, I congratulate Manan, Anna for launching this 24/7 accessible, very affordable, anonymous.
let's be happy. So basically, what Anna said is true because we are trained professionals. Unfortunately, we in our school and college life focus on intelligence quotient. Moreover, there is need to focus on emotional quotient, social quotient, and moreover adversity quotient. So when we face challenges, when we face emergencies, that time when there is some calamity, we tend to lose our temper and take some erratic decisions. But if you have some kind of help, if you can consult, because this is 24 by 7, as police service is 24 by 7, Let's Get Happy is also 24 by 7. So I had read one book Viktor Frankl has written, The Search for the Meaning of Life. In that, there is one incident that he has narrated that he came out of the Nazi concentration camp, as we know all. This is a great psychologist. And in the midnight, he got call from a lady who was about to end her life. So he talked the whole night with her. And when in the morning, she said that I'm not going to commit suicide. So what was the reason? Did I motivate you? No. You just listen to me. You just listen to me. You were ready to listen. There is somebody in the world to listen to us. So we, as Joint CP Law and Order, we started 5 counseling centers in Mumbai city. 23 psychiatrists help the victims of, particularly children of the victims of sexual assaults. And we shared their contacts with the permission of the parents, and that did miracle. So they should come out of the trauma, and this is the facility which is very affordable, and I'm sure this will help the young generation who is in search of wrong substances to get. Anna said that dopamine, serotonin or oxytocin is available through our all social media. No, that in a positive way. Yoga, yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dhyan, dharana, samadhi, you get everything. All. And I'm sure this will definitely help the youngsters, the seniors, women in traumas, domestic violence, what not. So I congratulate both the leaders in this field. Thank you so much for inviting me. Jai Hind. Thank you so much for being here, sir. Jai Hind. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you for being here. But we have to still be here because I think now we open the forum for the public's questions. Okay. So I think we'll be back. Hello. Okay. Now we open the forum for your questions. Request you to raise your hand and the mic will be passed to you. Please say your name, publication, and for whom is your question. Request your questions, small request for the questions to be around the app and around health, mental health issues. So please, anybody has questions? Okay. Now you have Anna Lipika. Okay. You have always been, as he also said, you have always been a fitness freak. And now getting onto this, it's a very big mental issue, So, why virtual? We could have a personal touch, as you said. Veda has the family personal touch is also so important. Veda has the personal touch, but unfortunately we are not present all over the country till we are. And this is also that people like to be anonymous. People don't want to be, tell the world what the problem is. So this is a 24/7 service. You can't wait for the offline center to open. And when it's available online, you can go there, talk to people. And like Vishwasji said, it's about listening. If all we have to do is listen to people, touch people, hear them, understand them, and I think major issues can be resolved. So I think that's why Let's Get Happy, which is 24/7 with probably the best of doctors from all over. And stress and tension is all over, every individual goes through stress,
tension and agonies, and miseries. But since he referred to Bollywood, why is Bollywood is an easy target, and why are they not being able to cope up with mental tension? No, that's not true. I'm from Bollywood, and I Yeah. cope up to mental tension pretty well. I've seen a lot of failure also. I haven't been around for 7-8 years, but that doesn't mean I'm stressed about anything. All of us have stressed. And we need to realize that because we're humans, if we don't have stress, we don't have feelings, we're not human. We're human, and once we understand that we're all going through the same boat, how we handle it, whose help do we seek? They say men shouldn't cry, men shouldn't talk about their problems. The more you talk about your problems to a friend of yours, maybe he or she will help you overcome that and see it better. Step back, see what is disturbing you. Like you said, journaling. Write down what you're going through, why you're going through it, what is it that disturbs you, and start working on it. I think it'll make a big difference, and that's why, kudos to Man for coming up with this, going through it himself, coming out of it, developing this, understanding it, educating himself about it, and then to this app. Probably this is that one solution where we would listen. And the takeaway from today is, and from what Vishwas said, is we should also be happy apps ourselves. Listen to people, understand people. So if you believe you're an app yourself and you can make a difference, yes. Bollywood, because it sells. TRPs work, and that's why it's Bollywood everywhere. So it's not that दुनिया हमसे पूछ रही है, हमारी मीडिया ही बार-बार इन चीज़ों को सामने लेकर आती है. तो हम किसी और से क्या पूछें? आई थिंक अपने आप से पूछना चाहिए कि हम क्यों बॉलीवुड को हर वो चीज़ में आगे डाल देते, खुशी हो, दुख हो, या किसी भी चीज़ में बॉलीवुड. प्रॉब्ली प्रेशर भी ज़्यादा है, जजमेंटल है, लोग हमें जज करते हैं, हम पब्लिक फिगर्स हैं. तो सक्सेस भी हमारे लिए मायने रखता है, फेलियर भी मायने रखता है, और लोग बात करना चाहते हैं हमारे बारे में. Yeah, unfortunately today, you must be knowing Nitin Desai, the art director. You must have worked with him. So unfortunately, we are losing such a precious gem. He committed suicide. If you would like to share something, Heartfelt condolences to him, his family. All I know was one of the most talented art directors, one of the most humble art directors, and one of the finest human beings. Now, I saw him as that. What was it that drove him to do that is that big question. They say, God always wants the good ones with him. So does he keep calling them because he needs them? I don't know, but condolences. Hi, sir. Samina here from Times of India. My question is to you. Recently, an RPF Jawan also killed, the people around him and, even one of his colleagues because he was mentally not stable, as the statements came out. Do you also feel that, such initiatives should also be given to people who are on higher authority levels so that they're very clear where exactly their directions are? He was unstable but on duty, actually. Yeah, but the Army, the Navy, the Air Force, people on duty 24/7, the fire brigade, the firemen, the BMC, they are at their job 24/7. So I think from an individual perspective, from our perspective also, looking at them differently is also very, very important. हमें लगता है कि यार BMC अपना काम ही नहीं कर रही, ये लोग अपना काम नहीं कर रहे. वैसे नहीं है, हम हमारा काम नहीं कर रहे. हम अगर वो कचरा फेंकना छोड़ दे, हम अगर रूल्स फॉलो करें, हम अगर सिग्नल न तोड़े, हम अगर तैनात हो as citizens, I think हम उनके लिए काम बहुत आसान कर देंगे. They are working non-stop. So we have to understand, empathize with them and work with them. I think that's important. I think ज़िंदगी ऐसे होगी क्योंकि हम सोशल मीडिया पे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं. जो हम हैं नहीं, हम उसको पोस्ट कर रहे हैं और गलत दिखा रहे हैं. तो हमको लगता है हम हमारे एक्सपेक्टेशन से ही वी फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ आवर ओन एक्सपेक्टेशन. जो एक्सपेक्टेशंस किसने दिखाया दुनिया को? मैं खाता हूँ दाल चावल और पोस्ट करता हूँ कुछ और. वो क्यों? सो ये वर्चुअल वर्ल्ड से हम जितना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दुनिया है, ये टेक वर्ल्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, लेकिन वो बैलेंस करना हमारे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है.
और हमें क्या खुशी देती है, आप बच्चों को देखिए, उन्हें क्या चीज़ें खुशी देती है, बाहर बारिश में खेलना, कीचड़ में जाके गिरना, हमें लगता है कि यार ये ख़राब है, लोग बोलते थे कि बैरफुट चलना अच्छा नहीं है, कीड़े मकोड़े डिजीज़ेस हो जाते हैं, आज बोलते हैं ग्राउंडिंग है, वो आप ज़मीन से जुड़ जाते हो, आपके लिए अच्छा है। तो आई थिंक अगर हम वो सारी अच्छी चीज़ें एनकरेज करेंगे वो फ़र्क पड़ जाएगा। आई थिंक दैट्स वेयर हैप्पी कम्स इन, जहाँ आप बात कर सकते हैं लोगों से, क्या अपनी प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं। इट डजंट हैव टू बी मेजर, इट कुड बी अ डिजीज़, इट कुड बी अ स्मॉल प्रॉब्लम, और एहसास दिलाना कि एवरीथिंग इज़ गुड यार, अच्छा होगा। बच्चा जो आते हैं माँ और बाप के गले लगता है जब वो नाराज़ होता है, और उसे वो डोपामिन और वो सिक्योर फीलिंग मिलती है ना। तो आई थिंक लाइफ में, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कैसे सुधार लाई। अपनी खामियों को मैंने हमेशा सामने डाल दिया। आज शायद मैं हूँ जो मीडिया के सामने हर वो चीज़ बोल देता हूँ जो मुझे बोलना है, तो मेरे पे लोग डाउट कम करते हैं, वरना दूसरों पे डाउट ही रहता हमेशा। तो आई थिंक वो होना बहुत ज़रूरी है कि जो हम हैं वो है, और दिखाना किसको है। मेरे कंधे पे कितना भार है वो मुझे ही मालूम, शायद ये कंधा थोड़ा मजबूत है इसलिए वो सह लेता है, लेकिन तकलीफ़ें मुझे भी बहुत है। मैं उतना एंग्शियस आज नहीं होता खुद के लिए जितना मेरे बच्चों के लिए होता, जो सभी के साथ एक ही है। वी आर ऑल ह्यूमन। सो आई थिंक दैट दोज आर द एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू लुक इनटू। एंड फोर्सेस हम जिस वक्त अप्रिशिएट करना सीखेंगे, मैन इन यूनिफॉर्म, जब आप एक इंसान को इन यूनिफॉर्म देखते हो, जाके अप्रिशिएट कीजिए, शायद उसकी मेंटल स्टेट बदल जाएगी। हम उनसे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, हम हमेशा कहते हैं यार सरकार ऐसी है, ये गंदगी है, वो गंदगी करता कौन है? हम करते हैं। सो लेट्स गेट सम सिविक सेंस इन अस, एंड ये वर्चुअल वर्ल्ड से हम अगर दूर रहें तो अच्छा रहेगा। कहना ये भी है ना कि बच्चे देख के सीखते हैं, बोलने से नहीं सीखते, तो एक दूसरे के लिए भी कुछ करें। Hi, this is Sohail here. One second. Man wants to say something. I just wanted to add to that the actual inspiration for the app is the front row right here, the NSG. Hello. They were the ones who actually came up with the idea that we need a tool. They're sitting right here. Our first presentation was to the NSG. They're here, and I think the credit goes majorly to them because they said half the features on the app is because of their feedback. So this entire thought started with the forces. And we'll always be dedicated to BSF, them. आप देखिए ना, border पे खड़े हुए हैं. I mean, the BSF is standing at that border, तैनात. लेकिन हम उन्हें अलग नज़रिए से देखते हैं. जबकि I feel सिक्योरिटी करना ऐसी जगहों में, रन ऑफ कच्छ में जाइए, आप बीकानेर में इंटीरियर्स में रेत में जाइए, खड़े हैं वो बच्चे, तो मेंटली कैसे होंगे? तो हमें एम्पैथी, लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम, हर इंसान बदलेगा. और किसी को भी आज कोई जाके ग्रीट करता है या उसको अप्रिशिएट करता है, आप फोटोग्राफर्स हैं, आप उनको जाके मिलिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, वो प्यार आपको इमीडिएटली मिल जाता है. तो इट्स जो लोग, आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें, यू कैन गो ऑन एंड ऑन, बट let's all create a happy space is what I'm trying to say. Hi, Sohail here, Anna over here. So good to see you. Congratulations to you and the entire team. जैसे let's get happy. Today was a very sad morning. और हम बहुत सी stress से deal करते हैं. तो I just wanted to know, आपकी life में बहुत सारे ups and downs आए थे. There were lots of downs also where आपके production house में बहुत सारी फिल्में and lots of other things also. But then you coped up, as you said, तो any particular moment where you were very much बहुत ही stress थे, down थे, and you just came out because आपके आपसे सुने के लोग और वो शायद मोटिवेट हो जो इस तरह के कदम उठाते हैं, तो ऐसा कोई इंस्टेंस हो या ऐसा कोई वक्त था जो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आई है, पर लेकिन हर एक के ज़िंदगी में वो उतार चढ़ाव आता ही है, और हमें वी हैव टू फेस इट. सो योर नियर एंड डियर वंस, फैमिली से जुड़ा रहना इसलिए बहुत ज़रूरी है. एक दूसरे को फ़ोन करके गुड मॉर्निंग क्या हाल है, ना कि ईमेल भेज के या व्हाट्सएप भेज के. जनरल मैसेजेस जब आप व्हाट्सएप में भेजते हो, मैं कभी जवाब भी नहीं देता, लेकिन अगर लिखा हुआ है हाय सुनील, हाउ आर यू, मैं 100% जवाब दूंगा ही दूंगा.
और लोग फिर हम पूछते हैं कि यार लोग जवाब क्यों नहीं देते, आप किसी एड्रेस ही नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे दिवाली की विश एक्सेप्ट करोगे या क्रिसमस हो या ईद का। तो वो पर्सनल टच होना बहुत ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बट द ओनली थिंग दैट डिस्टर्ब्स मी इज़ जब हेल्थ कोई प्रॉब्लम हो। और इसीलिए क्या है, मैं प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करता हूँ। बच्चे हो, मेरा ग्रैंड चाइल्ड हो, भले चलने लगे तो मैं उसे गार्डन में भेज दूंगा कि भाग के आ जा, वो डोपामीन, वो गुड फीलिंग आपके दिमाग में आ जाएगी। तो आई थिंक व्हाट इज़ द ओनली थिंग दैट डिस्टर्ब्स मी इज़ द हेल्थ। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि उसे प्रिवेंट कैसे करें, खुद के हेल्थ भी, माँ का भी, बच्चों का भी, बीवी का भी, दोस्तों का भी। लोग बहुत बोलते हैं यार ये ज्ञान बहुत देता है, लेकिन मैं ज्ञान जब देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है यार सिगरेट मत पिया कर, थोड़ी एक्सरसाइज किया कर, बिकॉज आई नो व्हाट योर फ्यूचर इज। तो मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो इफ़ मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए तो इट्स रिगार्डिंग हेल्थ। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। जब पिताजी बीमार थे आई वॉज मेंटली अ मेस, लेकिन वो सारी चीज़ें हैं। और उसके लिए क्या चाहिए मुझे, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे दोस्त जो आकर 2 बार उसे देखिए, जाके किसी को अस्पताल में 1 बार जाके देखिएगा, वो रिस्पेक्ट आपके लिए कितना होगा वो इंसान के नज़रों में। क्योंकि बुरा वक्त था या हेल्थ वाइज आप आके जाके देख ले, आप उसको 100 गिफ्ट भेजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दुख के मोमेंट में अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मुझे उससे बड़ा हाई कभी नहीं मिलता। जब कोई बीमार हो और कोई मम्मी को देखने आए या डैड को देखने आए, मैं हमेशा सोचता हूँ इसे ज़िंदगी भर मैं याद रखूँगा। तो आई थिंक दैट इज़ माई मोमेंट। बाकी आवन जावन रहता ही है। One more thing, like हमारी इंडस्ट्री में, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल कम विथ होप्स, बहुत स्ट्रगल भी करते हैं। मतलब काफ़ी लोगों ने मकाम मतलब उन्होंने हासिल किया है, पर देर आर लॉट्स ऑफ अदर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग। तो ये ऐप जो है, आप उस पर कितनी बार पर्सनल यू ट्राई टू सी एंड यू विल ट्राई टू गिव मैसेजेस, और या हमारी इंडस्ट्री के लिए कुछ इस तरह से पर्सनल वे में यू आई थिंक प्रोफेशनली बहुत सारे मास्टर्स है इसमें। मान हैज पुट अ टीम दैट इज अनबिलीवेबल व्हिच इज 24/7। तो दे विल बी देयर ऑफ कोर्स। मान हिमसेल्फ, मैं हमेशा मान से कहता हूँ कि मान आपको करना क्या है, आपको यू हैव टू do great podcasts with great people यानी जिन्होंने फेलियर बहुत देखा और उसके बाद they've risen and achieved something in life। क्योंकि हम सीखते सिर्फ और सिर्फ फेलियर से, अपनी खुद की हो या किसी और की हो, वहाँ से हमें सीख बहुत ज़्यादा मिलती है, गलतियों से ही सीख मिलती है। तो इफ़ वी स्टेप बैक एंड सी कि या क्या वो चीज़ है हमेशा मुझे खींचता रहता है, एंड वी एनालाइज दैट, इट वर्क। सो आई थिंक मान's got a fantastic team in Let's Get Happy। 24/7 जो सुनने के लिए तैयार है, आपकी आइडेंटिटी को खुफिया रखते ही, छुपा कर। तो आई थिंक द ऐप इज डूइंग एवरीथिंग। देयर इज अ प्रॉब्लम एंड आई सी अ सॉल्यूशन फॉर दैट। Hello. Yeah, this is Rajiv Vijayakar, News India Times, USA. I just have 2 questions. One for Suniel Shetty ji. That is, you always maintain your diet. That is one of the ways in which your fitness is there. But do you suggest some kind of variation or requirement in the diet for mental fitness as well? And the second question is for Mr. Thakur. I mean, Sunil spoke about journaling. How does that help you taking problems? So, sir, the first step of recovery from any mental health issue is by acknowledging that I have an issue. So journaling actually exactly does that. Whatever problem you have, if you write about it, 50% of the power you have taken away from that problem. So it is very effective as an exercise. Journaling really helps. I always tell, I was discussing this earlier, that the first thing I always tell all my clients who come to Veda and even on Happy is first write about your cage. The cage that is holding you back and that is forcing you in this dark place. The minute you write about it, 50% of the power of that cage is gone. So journaling helps in a great way. एंड फूड, डाइट इज़ एवरीथिंग। डाइट इज़ प्रिवेंटिव वेलनेस। जब आप बीमारी नहीं पड़ोगे तो आप मेंटली आप देखिए, ना हार्ट बर्न है, ना डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, ना ये है, तो आधी बैटल तो आप जीत ही चुके हो। इसलिए हम बोलते हैं कि वेलनेस इज़ फार चीपर देन इलनेस। बीमार गिरो ही मत, ये मेरा मानना है, क्योंकि आधी बैटल आप जीत चुके हो। सुबह जिम चले गए या कुछ भी चले गए तो आप पिता हो तो आपके साथ आपके पास एनर्जी ज़्यादा है बच्चों के साथ वक्त बिताने का। आपका
टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इतने अच्छे हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ भी वक्त बिता लेते हो, हेल्दी खाते हो, बाहर जाने का मन भी करता है, यू आर कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग. एक कंसिस्टेंसी है आपकी ज़िंदगी में, और किसी के भी ज़िंदगी में अगर कंसिस्टेंसी आ जाए, आई डोंट थिंक कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है. ऊपर नीचे तो होते ही रहता है. मेरे फ्राइडेज कितने ख़राब रहे, लेकिन आज मुझे पता है. आप अगर मुझसे पूछेंगे कि क्यों फेलियर देखा आपने, मैं A to Z आपको बता दूंगा कि मैं फेल क्यों हुआ मेरे ज़िंदगी में, यू नो. एंड बट आई हैव एक्सेप्टेड इट. ठीक है यार, ज़िंदगी में बहुत कुछ है, अभी भी बाकी है. वही एनर्जी है मेरे में. फिल्में ही सब कुछ नहीं है. ऑफ कोर्स फिल्मों के बिना मैं जी भी नहीं पाऊंगा, लेकिन इट इज़ नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग. सो डाइट is a very, very important part of overall health. And health is again connected to mental and physical fitness. Because they say that 90% of the diseases also stem from the mind. And From the gut. from the gut. From the gut. This, according to me, is more important than my mind, because this decides कि आज यार feeling अच्छी नहीं है, तब ये सिग्नल ले लेता है कि हाँ अच्छी फीलिंग नहीं है. ये बोलता है चकाचक हूँ मैं आज. योग, आयुर्वेद, प्राणायाम, आप प्राणायाम करके निकले हैं, एंड देन यू टेल मी हाउ यू फीलिंग, यू नो. तो इट आई बिलीव आवर कंट्री एंड इंडिया, यू नो, हैप्पी में आई आज बोले, आई एंड में विद अ डॉट इज इंडिया, आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन. वो सब कुछ है हमारे देश में. तो इसी को हम अगर यूज़ करना चाहें, हमारी चीज़ों को यूज़ करना चाहें, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा. हम वेस्ट की तरफ बहुत भाग रहे हैं, यू नो, वेस्ट की सोच, वेस्ट की ये, इसलिए वहाँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है. जबकि यहाँ हम जब से टूटने लगे फैमिली से और हटने लग गए, व्हाट्सएप मैसेज करने लगे, ईमेल भेजने लगे दोस्तों को, परिवार को कि मेरी शादी है तो आप आ जाना. पहले हम कार्ड लेके घर जाते थे. आज कोई घर पे आएगा तो लोग पूछे, अरे बिना पूछे घर कैसे आ गया? तभी तो चाय नाश्ता माँ सब तैयार रखती थी. तो आई थिंक वो सोच में हम अगर वापस चले जाएंगे तो खुश रहेंगे. That's what I believe. I may be absolutely wrong, but honestly. Thank you. Hi sir, this is Shubhajit over here, this side. First of all, kudos, you're, I think, always running ahead in every nice initiative. So congratulations to you for that. Thanks to friends like Man, yeah, that they believe that I can be a part of this initiative. Honestly, you know, कहते हैं ना कि आप अच्छे सोचते हो तो अच्छे लोग आपको ढूंढ ही निकाल लेते हो. So I think that's what's happening in my life, and that's why I say कि probably this is the best phase of my life. Failure देखा, लेकिन मैं आज अपनी तरीके से success देख रहा हूँ, अलग success देख रहा हूँ. सर इसका नाम है लेट्स गेट हैप्पी. आई थिंक हम लोग सब वी आर ऑल हैप्पी इन अ वे, बिकॉज आई थिंक दिस वाज द नीड ऑफ द आवर. आई थिंक एवरीबडी ओवर हियर इन दिस रूम रियलाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, बट कहीं ना कहीं जाके वो सेम लोग, द वन प्लेस वेयर दे फॉल्टर इज दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू कंडीशन देयर माइंड इन सच अ वे सो दैट मेंटल हेल्थ पे फोकस कर पाए. सबको पता है कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंटल टफनेस उतना सबके पास नहीं होता to understand and kind of groom into that space. So what would be your advice sir कि चलो मेंटल हेल्थ आपको पता ये है, अभी अपने माइंड को ऐसे ग्रूम करो, उसको और ऐसे स्ट्रांग बनाओ सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाई यू नीड टू गो. उसके आपका क्या? I think मान ने आपको जवाब दे दिया, and मान will be a better answer because of journaling. अपने प्रॉब्लम्स को लिखना, क्या आपको यू नो, फॉर मी पर्सनली, मुझे जब भी कोई पर्सनली कुछ बोलता था तो मुझे बहुत ख़राब लग जाता था. यू नो, हफ्ते महीने तक मैं वो थॉट लेकर निकलता था, और महीने के बाद भूल जाता था. मैंने लिखना शुरू कर दिया कि यार आज तक ये डेट तक मुझे एक्चुअली मान कि ये डेट तक मुझे सता रहा है, ऐसे चलो एक हफ्ते कम कर देता हूँ, और वो कम होते गया. आज जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि सच है गलत है, सच है तो इसको सुधारो, और सामने वाले से बात कर लो कि हाँ यार भाई मेरे से गलती होगी, भूल जा, निकल गया. और अगर मैं ये देख लेता हूँ कि उसमें सच्चाई नहीं है, तकलीफ तो उसको है, तो मैं इमीडिएटली भूल जाता हूँ. तो आई थिंक मेंटली मैंने अपने आप को कन्विंस और ये कर दिया. जब आप खेलने जाते हो एज अ टीम, आप बैटिंग करते वक्त पहले तो बटरफ्लाइज होती है, सबको होनी ही चाहिए, लेकिन उसके बाद जब आप 4 बॉल देख लेते हो, एनालाइज कर देते हो, सही बॉल को छोड़ देते हो और सही बॉल को मारते हो, एक मिडल ऑफ द बॉल बैट पे आ गया ना, उसके बाद निकल पड़ती है. लाइफ भी वैसा ही है. रहो, देखो, संभलो, सीखो और सीखो. अगर आपको उसी प्रोफेशन में जाना है, तो जर्नलिज्म में हो या आप एंकर बनना चाहते हो अभी,
तो सीखो, देखो, दूसरों से एक्सेप्ट करो, अच्छाई देखो दूसरों में, अपने आप आ जाएगा. Which means I'm in a happier space. You know, and so like Man said, journaling is the most important. क्योंकि हम सब एक ही चीज़ से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं. बीमारी, फैमिली, फाइनेंस, रीच आउट टू समवन, वो भी मिल जाता है. लेकिन अब अगर आपकी सोच ये है कि मैं हर एक को रीच आउट करके वैसे ही करता जाऊंगा बार बार, वो नहीं होगा आपसे. बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड. So be true to yourself. Yeah, it falls into place. Thank you, sir. Thank you, and Hello, thank you for the lovely answer. and One last question. That's Yeah, it. Yes. हेलो हाय सर. जिस तरह हम आपको देखते हैं बॉलीवुड से आप इतने जुड़े हैं, अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो ज़्यादातर हमें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में ही देखने को मिलती है. तो आप किस तरह वेदा आपको वहाँ तक प्रमोट करते हैं अपने क्लोजेस? आई थिंक वेदा आप लोग प्रमोट करेंगे, लोग प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये आपको सुनेगी, आपको वो खुशियाँ देगी और होपफुली वो बैलेंस करेंगी. क्योंकि मान फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इसने नहीं सोचा था, ये इससे गुजर चुका है एंड ही वांट्स टू वर्क ऑन इट. तो जब एक सोच नेक सोच होती है तो अपने आप वो अपनी जगह ढूंढ ही लेती है. एक्सेस पानी भी अपनी जगह ढूंढ ही लेती है. तो आई थिंक वैसा है. एंड एज फार एज बॉलीवुड का इज़ कंसर्न, आई थिंक एक बहुत अच्छी जगह है, एक खूबसूरत जगह है. कुछ चीज़ें हुई है, लेकिन एंटरटेनिंग फिल्म्स बनाते हैं हम दुनिया को एक अलग दुनिया में लेकर जाने के लिए. सो आई थिंक हैप्पी अपनी जगह ढूंढ ही लेगी. मैम जस्ट वांटेड टू ऐड कि आपने बोला बॉलीवुड में डिप्रेशन. एक्चुअली इंडिया में आज की डेट में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं. ये वो लोग हैं जो दवाई ले रहे हैं, तो जिनके बारे में हमको पता है. जो सामने ही नहीं आ रहे उनके बारे में पता ही नहीं है. तो 20 करोड़ लोग आप समझ सकते हैं. और ये पुराना सर्वे है 2015 और 16 का. कोविड के बाद अभी इसका क्या हाल है, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है किसी को. WHO एक्चुअली बोलता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज इज़ अ बिगर पेंडेमिक देन कोविड. दिस इज़ द हेडलाइन April 4 टाइम्स ऑफ इंडिया. सो ये इतनी बड़ी फिगर है. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you everyone for your insightful questions and remarks. Thank you so much. Hope you got all your answers. Great, and hope you spread the word forward about Veda, about the mental issues that people are facing, and there is help now. There is help 24/7 available. So please tell your family, friends, whoever needs help, in whichever way they can get, please get help. That is so true. It is a bigger pandemic than what we've already gone through. And because of that pandemic, this is gone to a different level altogether. Okay, thank you so much. Man, I would request you to call the team of Veda, in fact, the core team behind Veda. You please invite everybody. for a I just photo wanted to opportunity. present to you guys some people who actually I'm getting a little bit of importance here, but it's everyone else who's done this. Shiv, who's a co-founder with me, Raj, sir, Abhishek sir, Brigadier sir, Please come on stage. NSG that actually started the entire idea. That's the core team behind. Meet, wherever you are, Primathon, come on. We'll have a nice photo opportunity with the whole team as well. So this is the tech team, the IIT graduates, and they've created the entire code and written the entire app themselves. That's the team behind the application. Lots of research over the years has gone into it. ये हमारी टीम. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सबका. ओके, थैंक यू फॉर ऑल योर क्वेश्चंस. एंड अब सबको लगता है भूख लग रही होगी मेरे ख्याल से इतना कुछ सुनने के बाद. आइए एक और फोटोग्राफ्स.